प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अभी डाटा कलेक्शन हो गया आपका, ठीक है। अभी वो डाटा को रिप्रेजेंट कैसे करना है तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। So we will cover all these topics: uses of presentation, principles of presentation, types of presentation, tabular, graphic, diagrammatical and other. Okay, so let us see. Now, why it is important to present your data properly is because we want, end में हमने research किया है तो वो हमको communicate करना है तो everybody, the scientific community। तो अगर आपका communication में आपके presentation डाटा का अच्छा नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, टेबल्स है, ग्राफ्स है, वो कुछ अजीब बने हैं, तो वो कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है कि आपके रिसर्च में आपको क्या फाइंडिंग मिला। Therefore, it is important for you to represent it properly, organize, summarize, and communicate the information, and make the data simple, concise, meaningful, interesting, and helpful in further analysis. Once the data is collected, it has to be classified and organized in such a way that it becomes easily readable, interpretable, and that is converted to information. Before the calculation of descriptive statistics, it is sometimes a good idea to present the data as table, charts, diagrams, and graphs. Most people find pictures more helpful than numbers, in the sense that, in their opinion, that represent data more meaningfully. So, what are the uses of presentation? Easy, better understanding of the subject, provide the first-hand information about data, helpful in future analysis, easy for making comparisons, and attractive. ये सारे यूजेस है आपके डाटा प्रेजेंटेशन। फिर प्रिंसिपल्स है कुछ जो गवर्न करते हैं कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो कैसे करना है बताओ। पहले सबसे पहले सिंपल बनाओ, सिंपल वे में प्रेजेंट करो, इंटरेस्टिंग वे में प्रेजेंट करो, कंसाइज रहना चाहिए लेकिन डिटेल भी लॉस नहीं होना चाहिए। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस उसमें अच्छे से हो पाए, स्टैटिस्टिशियन को कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ठीक है। डिफाइन द प्रॉब्लम, इट शुड डिफाइन द प्रॉब्लम एंड शुड सजेस्ट इट्स सॉल्यूशन। So there are three types: text. You can present the data using text, tables, and visual, graphic, and diagrams. Okay, so ये आपके पास ऑप्शन है। टेक्स्ट का रिप्रेजेंटेशन जो है तो पैराग्राफ और सेंटेंसेस में, तो आपकी अगर क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल the incidence rate of delirium following anesthesia was 11% in 2016 and 15% in 2017. No significant difference of incidence rates was found between 2 years. ये हो गया आपका टेक्स्ट रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपको समझ में आएगा, ये दो सेंटेंसेस में पढ़ रही हूँ तो मुझे उसको समझने में जितना वक्त लग रहा है, तो अगर इसके बजाय मेरे पास ग्राफ रहता, टेबल रहता, तो इमीडिएटली मुझे समझ जाता था कि 2016 में इतना है, 17 में इतना है, तो बढ़ गया है, ठीक है। ऐसे कमिंग टू टेबुलेशन, ऑलवेज बेटर देन टेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें विच प्रोस्टोडोंटिक्स बुक डू यू प्रेफर टू रीड द मोस्ट? बाउचर, रडन, मरो, कितने लोगों ने क्या बोला है, ठीक है। ये टेबल में फटाफट आपको दिख जाता है। तो सबसे ज़्यादा बाउचर पढ़ने वाले लोग हैं, डेफिनेटली हमारा कॉलेज नहीं है, सम अदर कॉलेज फ्रॉम सम अदर कंट्री, बिकॉज हमारे कॉलेज में भी रीड रंगराजन सिंपली। सो दिस इज द टेबल टेबुलर फॉर्म। नाउ रूल्स ऑफ टेबुलेशन, कुछ रूल्स है जो टेबल टेबुलेशन में फॉलो करने हैं। नंबर शुड बी असाइन टू द टेबल, टाइटल शुड बी गिवन, द कंटेंट शुड बी क्लियर, सब टाइटल शुड बी गिवन, कॉलम और रो को सब टाइटल देना है। कॉलम में ग्रुप इंटरवल्स है तो आपको उसको अलग अलग करना है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट मस्ट बी मेंशन क्लियरली, कोड्स, एब्रिवेशन, सिंबल सबको आपको एक्सप्लेन करना है फुटनोट में, नीचे में, कि ये एब्रिवेशन का मतलब क्या है। और अरेंजमेंट ऑफ डेटा शुड बी लॉजिकल। सिग्निफिकेंस क्या है? इट सिंप्लीफाइज द डेटा, कॉम्प्लेक्स डेटा भी सिंपल हो जाता है, ठीक है। आइडेंटिटी मिलती है डाटा को, पैटर्न रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। अननेसेसरीली रिपीटेशन नहीं होता, बार बार सेंटेंस में हो सकता है जो टेबल में नहीं होता, ठीक है। तो टेबल नंबर विथ टाइटल, रो, कॉलम, हेडिंग, एंट्रीज, फुटनोट एंड सोर्स। प्रिकॉशंस, टेबल शुड सूट द साइज ऑफ द पेपर। आपका पेपर अगर लैंडस्केप में ओरिएंटेड है और आपने उसको पोर्ट्रेट में बनाया तो नहीं चाहिए। सोनल, यू वांट टू आस्क समथिंग?
can unmute yourself and ask. Sonal, can you hear me? Right, so I saw her hand raised. You can type in the chat box. Right, so we'll go ahead. Captions and stubs should be arranged in a systematic order. Unit of measurement should be maintained. Figures should be rounded to avoid unnecessary details. Okay, so this is a tabular representation. क्या क्या है इसमें आपको दिख रहा है? टेबल का नंबर, टेबल का टाइटल, कॉलम का हेडर, रो का क्लासिफायर, बॉडी है, सोर्स का नोट है, ठीक है? तो ये सब आपको देना है। टाइप्स ऑफ टेबल्स है, अलग अलग टाइप्स। तो रेफरेंस टेबल है, टेक्स्ट टेबल है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, डबल, ट्रिपल, मल्टीपल है। तो ये अलग अलग टाइप्स के टेबल्स है। So you need not go into details. Just remember that it should be clear, concise, and self-explanatory. ठीक है? These are simple table. ये डबल टेबल हो गया, ठीक है? ये ट्रिपल टेबल हो गया, टेबल के अंदर टेबल, लाइक दिस, मल्टीपल टेबल, हर जगह पे क्लासिफिकेशन। Now coming to graphs and diagrams, they simplify the complex information by using images. Okay, and they are effective for presenting large data. It must be chosen so that the readers can easily understand the information. What are the advantages? They are attractive. They give a bird's eye view of data. They can be easily understood. They facilitate comparison. Impression created by them is long lasting. Okay, so लिमिटेशन भी है अभी। ग्राफ और चार्ट भले ही दिखने में अच्छे हैं, इंटरेस्टिंग है, लेकिन उनके लिमिटेशन है, ठीक है? दे कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑल्टरनेटिव फॉर न्यूमेरिकल डेटा। वैल्यूज तो लगते ही हैं, भले ही ग्राफ में पिक्चर दिखता है, लेकिन वैल्यूज भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? दे आर नॉट एक्यूरेट एज टैबुलर डेटा। ओनली टैबुलर डेटा कैन बी यूज फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ग्राफ का नहीं होता है, टेबल्स का होता है, ठीक है? मिस इंटरप्रिटेशन भी होता है, मिस रिप्रेजेंटेशन भी होता है, ठीक है? तो यू हैव टू यूज इट केयरफुली। नाउ देयर आर सर्टेन रूल्स फॉर ड्राइंग ग्राफ्स एंड डायग्राम्स। Choose the form of diagrams and graphs which is capable of representing the given set of data. Title देना है, title should be there, scale should be there, ठीक है? Scale जो रहता है ना ग्राफ में, x axis, y axis, वो उसके बाद it should be neat, attractive, original, simple and economical. There are certain differences between graphs and diagrams. To construct a graph paper is used. Obviously, digitally now there is no graph paper required. Diagram can be constructed on paper. So likewise, there are differences. Let us skip this. So what are different types of graphs? Histogram, frequency curve, frequency polygon, line graph, etc. The diagrams can be bar diagram and pie diagram. So let us see them one by one. What is a histogram? ये हिस्टोग्राम, ठीक है? ये हिस्टोग्राम में क्या रहता है कि आपका एक पर्टिकुलर वेरिएबल है that is taken along the x-axis and frequency along the y-axis, ठीक है? The class intervals are seen as base rectangles with height proportional to class frequency, ठीक है? और इनके बीच में गैप नहीं रहता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हाइट इन सेंटीमीटर है एंड फ्रीक्वेंसी है, ओके? सो एक्स एक्सिस पे हाइट है और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी एंड देयर इज नो डिफरेंस between the bars, they are connected to each other. This is histogram. ठीक है? तो इसमें क्या समझता है कि मोड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। अभी ये मीन मीडियन मोड वगैरह जो है वो कल आपको समझेगा जब हम बायोस्टैटिस्टिक्स का लेक्चर करेंगे। तो मीन मीडियन मोड में यानी सेंट्रल उसका जो एवरेज है वो क्या है वो यहाँ से पता चलता है हिस्टोग्राम से, ठीक है? Then there is a frequency curve. If you take the variables along x-axis and frequencies on y-axis and you plot it and the curve is obtained, it is called as frequency curve. Histogram ही है पर उसको आपको curve जैसा draw किया है, so it is frequency curve. Now frequency polygon, this is frequency polygon, ठीक है? वो curve था और ये polygon, ठीक है? Line graph.
line graph is there when we are showing a comparison between two variables which are plotted on x and y axis. यहाँ पे frequencies नहीं है, two variables है, ठीक है? तो कोई thunderstorms कितने आ रहे हैं, last 2 years में कितने thunderstorms आए, कितने floods आए, तो time against the rate of occurrence, तो इसको बोलते हैं line graph. Now coming to diagrams. So first is bar diagram, very common. ठीक है, तो सबसे पहले simple bar diagram. ठीक है, simple bar diagram आपको सबको मालूम है, Excel sheet में directly बन जाती है. We will have more experience when we do actually our research project. ठीक है, तो उसके बाद है subdivided diagram, bar diagram. Subdivided मतलब एक ही बार में दो चीज़ों का representation है कि पाकिस्तान में मेल्स फीमेल्स कितने हैं, रेशो, यूएसए में कितने हैं, स्वीडन में कितने हैं, तो एक ही इसको स्प्लिट किया हुआ है. ठीक है, देन परसेंटेज बार डायग्राम. परसेंटेज मतलब पुअर कम्युनिटी में, रिच कम्युनिटी में एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम फैट्स कितना है, एनर्जी फ्रॉम प्रोटीन कितना है, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट कितना है. तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक ही इसके 3 सब हेडिंग बना के इसको प्रेजेंट किया हुआ है, इजी टू अंडरस्टैंड. मल्टीपल बार डायग्राम. ठीक है, तो सपोज क्वेश्चन यू आर आस्किंग द क्वेश्चन ऑन लाइकर्ट स्केल. कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो कि आपको टेंशन कैसा लगा, एस्थेटिक वाइज, कंफर्ट वाइज, मैस्टिकेशन वाइज, रिटेंशन वाइज, और आपने उसको दिया हुआ है स्केल. कितने लोगों ने एक्सेलेंट बोला, कितने लोगों ने गुड बोला, कितने रेगुलर, कितने ने बैड. दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल बार डायग्राम. नाउ डेविएशन बार डायग्राम, ऊपर नीचे दोनों. Positive, negative. When it is used, when you can have a negative value for something. आपका कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें इसकी जरूरत है, ठीक है. Then comes the scattered diagram. This is a mathematical tool when you correlate between two random variables. बहुत important है scattered diagram. ठीक है. So as the name suggests, they are a form of sheet of paper upon which the data points corresponding to the variables of interest are scattered. ठीक है, and you draw a line in between them and measure कितना closely वो they are related to each other. Judging by the shape of the pattern that the data points form on this sheet of paper, we can determine the association between two variables and can further apply suitable correlation analysis technique. Okay. Now pie diagram, very frequently used by early researchers. Pie diagram. So patient choice of restoration after tooth preparation. कितने परसेंट ने मेटल सिरामिक बोला, कितने परसेंट ने मेटल, फिर ऑल सिरामिक, ऐसे. ठीक है, तो एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज बट इन अ पाई डायग्राम. ठीक है, तो साइज ऑफ ईच एंगल इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इंटू 360. ऐसे आप कर सकते हैं. Now, what are the advantages of data presentation? It makes it attractive, impressive, simple to understand, easy to understand, helpful to make comparison, saves much time and energy. It gives good visual impact, clear picture of data. Okay, so to conclude, text and tables and graphs are effective communication media that present and convey the data. Remember this, that they are important and you should know different types and you should know which one suits your research question. Journal editors and reviewers will scan through these presentations before reading the entire text and their importance cannot be disregarded. ठीक है, तो आपको जब पब्लिकेशन के लिए आर्टिकल सबमिट करने का टाइम आता है तब आपकी जो ग्राफ, चार्ट, टेबल्स, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंस रहता है. आपकी जो कंप्लीशन रिपोर्ट आप सबमिट करते हो उसमें टेक्स्ट चल जाता है, लेकिन आप जब मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करते हो विच इज़ मस्ट फॉर योर बैच, आप सभी को रिसर्च का मैन्युस्क्रिप्ट सबमिट करने के बाद ही रिलीविंग मिलेगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट. सो इसके लिए आपको ये सारी सब चीज़ें ज़रूरी है. ग्राफ, टेबल्स, चार्ट्स, सिर्फ टेक्स्ट में आपने कंप्लीशन दे दिया तो दैट मे नॉट बी एक्सेप्टेबल. तो आप ये ध्यान में रखो, अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड यू कैन ऑलवेज काउंट ऑन अस व्हेनेवर यू रिक्वायर अस, वी विल हेल्प यू. ओके.